Hello everyone, welcome back to the Nifty City channel. सो मिड वीक वीडियो काफी कंफ्यूजन चल रहा है निफ्टी में, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी। आई एम गोइंग टू डिस्कस अ स्टॉक जो निफ्टी विफ्टी का बहुत बड़ा दिग्गज स्टॉक है, जो रिवर्सल पैटर्न दिखा रहा है, काफी ज्यादा करेक्ट हो सकता है इधर से। टू स्टॉक्स वी गोना डिस्कस। निफ्टी बैंक निफ्टी डिस्कस करेंगे फॉर द अपकमिंग एक्सपायरी। Let's start. Obviously midweek video है, so we are not going to do लंबा time frame. This is purely intraday, ये एक आध दो दिन के लिए what we're going to discuss, right? एकदम short, medium short term view है एकदम. So now let's see what has happened in the index. इतना confusion क्यों है? Rightly so, price action काफी confusing हुआ है. Now what has happened exactly is, so basically here we had this consolidation वाला day. ठीक है, ये जोन में रेजिस्टेंस ले रहे थे हम। नेक्स्ट डे लोअर बैंड पे गए, हम लोअर बैंड पे कंसोलिडेट किया, तो दो साइडवेज दिन हो गए हमारे पास। राइट नाउ दो साइडवेज डेज के बाद काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड था कि लास्ट एक्सपायरी में एक ट्रेंडिंग मूव आएगा। नाउ ट्रेंडिंग मूव कैसा था? फर्स्ट ऑफ ऑल बाय सिग्नल इधर जनरेट हुआ, राइट। इधर जनरेट होने के बाद वापस ये जोन में थोड़ा टाइम पास होके इधर एक और ब्रेकआउट दिया। सो नाउ इट वाज मोर और लेस बायर्स वर इन कंट्रोल हियर। ठीक है, काफी अच्छी क्लोजिंग हुई थी टुवर्ड्स द डे हाई। नाउ नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंस? ड्यू टू द यूएस मार्केट वी ओपन गैप डाउन, बट डिस्पाइट ओपनिंग गैप डाउन द मार्केट शोज इट्स स्ट्रेंथ एंड अगेन मूव्स अप। नाउ व्हाट वाज द बैड पार्ट हियर इज कि ये सडनली एक लोअर लो बना के नीचे का स्ट्रक्चर दे रहा था, राइट। सो नाउ समवेयर अराउंड ईयर, ऑल्दो सपोर्ट नहीं टूटा है कभी भी, बट समवेयर अराउंड ईयर एवरीवन फेल्ट कि नाउ सेलर्स आर डोमिनेटिंग। बट ये फिर रिवर्स हो गया, वापस ये ऊपर गया, एंड आज भी ओपन होने के बाद ऊपर ही सस्टेन कर रहा था। सेकेंड हाफ में वी हैव गॉट सेलिंग। सो नाउ व्हाट इज आर व्हाट आर माय थॉट्स फॉर द गेम अहेड? सो बेसिकली अभी क्या है कि टुमारो द इम्पोर्टेंट जोन्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। फर्स्ट जोन दैट वी गोना हैव इज दिस वन। ठीक है, 180 से लेके 190। Now, why 180 to 190 zone is so important? It is so important because 18,200 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है। सो 18,200 अगर ब्रेक होता है, 18,180 ब्रेक होता है, सो वी आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ लॉन्ग अनवाइंडिंग, राइट। काफी सारे पुट राइटर्स को एग्जिट करना पड़ेगा, अपना लॉस बुक करना पड़ेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी अ क्रूशियल जोन। अब जैसे ही ये जोन ब्रेक होता है, व्हाट इज आवर टारगेट? आवर टारगेट फर्स्ट ऑफ ऑल इज गोइंग टू बी 18,100, फॉलोड बाय 18,042 से लेके 18,055। ये एक्सपायरी में आई थिंक एटलीस्ट टिल थर्सडे, कोई थर्सडे एक्सपायरी के दिन पे सेकेंड हाफ में कोई एक्सट्रीम मूव आ गया तो अलग बात है, बट मोर और लेस आई बिलीव कि दिस रेंज इज व्हाट द एक्सपायरी शुड बी इन, unless the last 1 hour में some violent move happens and we break this zone. Otherwise, till here, I think 18,000 should hold. So 18,050 approximately is the major support. If this breaks, 18,180 breaks, we will get a nice short trade. First target is going to be 18,100, followed by 18,050. Now, on the upside, what can happen? Now, there is one more possibility. ठीक है, अभी market ऐसा गया. One more possibility, it can shoot up a little bit and then fall. That is one possibility. Other possibility is directly if we hit this support zone और इधर से कोई reversal candle दिख रहा है, तो a long trade can be taken. Otherwise, definitely if you want to wait it out, if you want to play it safe, तो ये high के ऊपर ही long trigger होगा 18,340 के ऊपर, and then obviously there will be no particular target in mind. Market is free to go. If we get this retracement till 18,040, then market का जो RSI levels है वो भी काफी healthy हो जाएगा, थोड़ा cool off हो जाएगा, and then we can be ready for our next rally, right? So this is all about Nifty, what we have. Now let's move on to Bank Nifty. Okay, so now in Bank Nifty, what we have is, what one thing that we can see clearly is that Bank Nifty is not being able to sustain above 43,500. Okay, दो तीन attempt कर चुका है Bank Nifty. So what we have here is basically the price action was we had a breakout here. Okay, on the zone here we consolidated.
केम बैक टू द ब्रेकआउट लेवल, टेस्ट किया एग्जैक्टली ये लेवल पे हमने ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट किया, फॉर्म्ड एंड देन वी वेंट हाई। नाउ दिस इज द जोन जहाँ पे हमारे ऑल टाइम हाई के पास था बैंक निफ्टी, एंड दिस इज द जोन जहाँ से काफी सेलिंग आई है, सेलर्स बैठे हुए ये जोन में, ये जोन में आए। एनीवेज वी ओपनड गैप डाउन नेक्स्ट डे, काफी सिग्निफिकेंट गैप डाउन था, बट वी बाउंस्ड बैक। ठीक है, अब ये बाउंस बैक में काफी लोग ट्रैप हुए होंगे। बाउंस बैक के बाद वी वेंट डाउन, स्ट्रक्चर बना के वापस इधर हमने सपोर्ट लिया, गए, लेकिन could not sustain and we broke this zone. Now after breaking this zone we went and we took support at 42,600. नाउ इधर काफी सेलर्स भी ट्रैप हुए हैं, तो ये हफ्ते में बायर्स सेलर्स दोनों साइड पे ट्रैप हुए हैं। सो थर्सडे सेकंड हाफ वी कैन एक्सपेक्ट सम वेरी बिग मूव्स, राइट? नाउ व्हाट हैज हैपेंड हियर, अगेन वी ओपन समवेयर फ्लैट, काइंड ऑफ फ्लैट, gone up and closed here. Now today what has happened is again we've gone up but not been able to sustain. देखो 43,500 के पास only we have not been able to sustain and we've again come down. Now जिस हिसाब का डेटा बन रहा है, right, the kind of data that we have in Nifty and Bank Nifty, I'll show you the open interest data as well. The kind of data that is being formed is suggesting that 43,500 के ऊपर definitely expiry नहीं होने वाली है. Similarly in Nifty we can say 17,350 के ऊपर expiry नहीं होने वाली है. One possibility that it stays in a range. रेंज व्हेन आई से इट इज गोइंग टू बी 43,000 से लेके 43,300 के रेंज में ही एक्सपायरी हो जाए, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। बट पर्सनली आई एम लिटिल ऑन द बेरिश साइड, बट you never know what is going to happen, so we have to obviously trade according to levels and zones. So here what we have is definitely resistance zone is going to be 43,600 से लेके 740 का range. This is the resistance zone. First support that we have is 43,000. Okay, this is the major level for us. 43,032 से लेके 87, ये जो जोन है, this is going to be our major support. ये break हुआ तो you will get one target of 42,780 followed by 42,600. अगर कुछ ड्रास्टिक इवेंट होता है एंड 42,600 ब्रेक हुआ, देन डायरेक्टली आवर नेक्स्ट सपोर्ट इज आवर बजट हाई ऑफ 42,015. ओके, सो these are the kind of levels that we have. I don't think 42,500 पे कोई सपोर्ट मिलेगा, ऑल्दो राउंड फिगर है. 42,600 ब्रेक होते ही आई बिलीव 42,000 तक मार्केट गिर सकता है, बट दिस 42,000 विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी इन द लॉन्ग रन. नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस द stocks that we have. Okay. Okay, so let's first discuss 3-4 stock recommendations that we had already shared. So first was obviously Bajaj Finance. ठीक है, बजाज फाइनेंस का इधर ब्रेकआउट पे शेयर किया था, roughly 6,000 odd, and 6,500 was the target. तो इधर बहुत अच्छे टारगेट्स ऑलरेडी हिट हो चुके हैं. लास्ट वीक वी हैड ऑल्सो डिस्कस, इधर समवेयर 200 EMA था. सो लास्ट वीक के जो वीकली वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था इधर 6,300 ऑड के आसपास, इधर जो 200 EMA के आसपास से लिटिल बिट प्रॉफिट बुकिंग कैन कम एंड देन इट कैन हिट टारगेट. एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट वही हुआ है. इट इज ऑब्वियसली गॉन अबव द टारगेट, इट्स गिवन अ फ्रेश ब्रेकआउट, बट आई विल वेट फॉर सम काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट इन दिस काउंटर. ठीक है, फॉर FNO पोजिशंस. इक्विटी इन्वेस्टमेंट वाइज में तो कीप this position for the long run, absolutely no issues. Second stock that we had was Divislab. Divislab today 3% positive. Okay, it is given a clean breakout of this level, so structure wise it's looking good. I want little more volumes to build up in Divislab. So if any kind of correction comes in Nifty, so obviously defensive sector हो जाता है pharma, so we can see some traction there. Keep in your radar, this is for an investment purpose, ये FNO के लिए नहीं था, and the stock is doing well. Okay, it's given good returns. Next stock we have is IEX that we had discussed. IEX इधर डिस्कस किया था ये लेवल के ब्रेकआउट पे. 11 days का कंसोलिडेशन पीरियड था, उसके बाद we had a very good candle. Now it has already given us decent returns. So this is another stock that we have kept on our radar. Oro Pharma was one stock जहाँ हम short गए थे. ठीक है, दिस हैज ट्रिगर्ड अ स्टॉप लॉस. सो हियर ऑन ब्रेकडाउन ऑफ दिस लेवल, ठीक है, इधर कंसोलिडेट किया, ये कंसोलिडेशन को ब्रेकडाउन पे हमने शॉर्ट किया था. ऑब्वियसली द नेक्स्ट कैंडल इटसेल्फ इट हैज ट्रिगर्ड आवर स्टॉप लॉस, छोटा सा एक स्टॉप लॉस इसमें ट्रिगर हो गया है. ठीक है, जो ट्रिगर हुआ है स्टॉप लॉस, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम. नो ट्रेडर गाइस कैन बी 10 out of 10 times राइट.
You cannot be 100% right in the market. You have to respect your stop loss and you have to respect your targets. ये दो चीजें रिस्पेक्ट करते हुए चलो. If you're right 5 out of 10 times also, you will make money. Now coming down to the stock, ठीक है. ITC, everyone loves the stock, right? ITC, ग्रेट स्टॉक, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा था, काफी बड़ा रनअप हुआ है. इफ यू सी आईटीसी, यू कैन सी काफी बुलिश था. नाउ व्हाट इज आईटीसी डन इज, हियर इट हैज गिवन आवर क्लासिकल, जो हमने डिविस लैब में मॉर्निंग स्टार यूज किया था, हियर इट हैज गिवन अ इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, राइट. इवनिंग स्टार फॉर्मेशन दिया है. अब कोई भी स्टॉक हमेशा के लिए बढ़ते नहीं रह सकता, बीच बीच में करेक्शन आएंगे, वो करेक्शंस को हमको यूटिलाइज करना है. Now, this stock from a perspective, you can see this was the major level of resistance. एक बार इधर रेजिस्टेंस लिया, सेकेंड टाइम इधर रेजिस्टेंस लिया, इधर एक काफी टाइम इसने बिताया है, स्टॉक ने एक बेस बनाया है. ये बेस के बाद इसने इधर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद ये रैली हुआ है. सो नाउ व्हाट इज आवर थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट. अगर ये ऐसा एक फॉर्मेशन हुआ है, आई विल गिव यू द एग्जैक्ट पॉइंट वेयर यू हैव टू डू योर एंट्री. हाई प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रीटेस्ट एटलीस्ट दिस बेस, ठीक है. ये जो 394 का लेवल है, ये 394 के लेवल को रीटेस्ट करेगा. नाउ वन मोर लॉजिक व्हाट वी हैव टेकन इन दिस इज, नाउ इफ यू सी, इफ आई ड्रॉ फिबोनाची फ्रॉम ईयर टू ईयर, राइट, दिस इज योर 61.8% रिट्रेसमेंट का लेवल, राइट. सो यूजुअली फिबोनाची का रूल क्या कहता है, whenever you have a uptrend and a stock retraces, maximum it can retrace 61.8. अगर ये लेवल के नीचे रिट्रेसमेंट हो गया तो ये अप ट्रेंड का स्ट्रेंथ ही नहीं था, राइट. अगर अप ट्रेंड का स्ट्रेंथ है, बुलिश है, बेस्ट सिनारियो क्या होता है, 38.2% तक रिट्रेस होके ये वापस चले जाए. बट मेरे हिसाब से बिकॉज ये कोइंसाइड हो रहा है, तो ये 61.8% तक रिट्रेस हो सकता है. सो 393.9, 394 राउंड फिगर आप पकड़ के चल सकते हैं in ITC. Now, another thing that one more confluence that is giving me confidence to go short in ITC, if you see down, this is the RSI. Okay, now you can see price has been constantly moving up, but we've already seen the strength RSI to strength index hota hai, that is already giving us a bearish signal. Okay, so this is called RSI divergence. Now we have RSI divergence, pure price action के basis पे we are getting negative signal, and Fibonacci के हिसाब से this should be our target 394 and this is our previous breakout level. ठीक है, कोई भी resistance को break होने के बाद that becomes a support. So this is our first stock ITC. Now इसमें entry कहाँ करनी है exactly, if I tell you, now this is the 15-minute chart that I have kept, right. Now this point that we have here, इधर सपोर्ट लेके कंसोलिडेट करके निकला था ऊपर, दो बार इधर सपोर्ट लिया है, वापस इधर सपोर्ट लिया है. जैसे ही ये लेवल के नीचे 15-मिनट कैंडल क्लोजेस, दैट इज 421.5 के नीचे, आईटीसी के शॉर्ट पोजीशंस कैन बी एक्टिवेटेड. ओके, फर्स्ट माइनर सपोर्ट इज गोइंग टू बी दिस समवेयर अराउंड 414, followed by this level 404 या 400 का राउंड फिगर आप पकड़ सकते हैं. Eventual target is 394. Right now, quickly moving on to the next stock that we have. Again, this stock also pure bearish. ठीक है, you can see इसमें दो तीन चीजें हैं. First of all, you can see volumes are picking up. ठीक है, selling intensify हो रही है. Every day selling का volume is increasing. Right, so this is in completely seller grip. Bear grip में जो होता है, that is, this stock is that, it's completely in seller's grip. Now the stock has already come down to its support level. ठीक है, ये उसका support zone है. Now what we have to do is, ये जो support zone का low है 680 के आसपास, 680, I'll tell you the exact figure. Okay, 684. ठीक है, 684 to 87 के बीच में. अब जैसे ही ये लेवल टूटता है तो डेफिनेटली नेक्स्ट सपोर्ट इज 654. इधर तक का तो जर्नी ये डेफिनेटली छोटा प्रॉफिट तो हमको दे ही जाएगा. बट व्हाट आवर कॉन्सेप्ट इज, व्हाट माय एनालिसिस इज टेलिंग मी, दैट अगर नाउ बोथ दी स्टॉक्स जो हमने शॉर्ट किया है, आईटीसी एंड यूपीएल, नाउ व्हाट वी हैव टू सी व्हेन वी आर एंटरिंग अ शॉर्ट पोजीशन, वी हैव टू आल्सो सी व्हाट द मार्केट कंडीशन इज लाइक. ठीक है, ऐसा नहीं कि निफ्टी रैली कर रही है एंड वी आर गेटिंग इनटू शॉर्ट पोजीशंस. So we have to see if Nifty is also showing weakness, then we will also go
prefer our short positions in different stocks, right? It has to go hand in hand. I'm not saying it has to go hand in hand all the time. ऐसा हो सकता है निफ्टी sideways है तो कुछ stocks बढ़ रहे हैं कुछ stocks गिर रहे हैं, that is fine. But if we're getting a clear trend in Nifty, clear bullish trend, then don't enter these short setups. Okay, this is my advice. Now, what can happen here is if अगर ये flow में ये लेवल को तोड़ देता है तो हाई पॉसिबिलिटी होगा कि ये लेवल को तोड़ के 654 पे सपोर्ट लेके ये वापस इधर तक आए, ठीक है? तो ऐसा जाए 654 तक रीटेस्ट करे और फिर कंटिन्यूएशन दे, दिस इज अ हाई पॉसिबिलिटी. तो हाउ विल वी ट्रेड दिस? जैसे ही ये लेवल टूटा, वील वेट फॉर द ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन होता है तो वील एंटर द ट्रेड, वील बुक आवर प्रॉफिट एट 654. Right, we will not keep our position, we'll book our profit at 654, let it retest and come down. Okay, अगर ये इधर से सपोर्ट लेके रिटेस्ट करके ही ऊपर चले जाता है तो नो प्रॉब्लम. अगर ये नीचे आके कहीं से भी रिटेस्ट करके नीचे आता है, जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा 654 का, वी विल एंटर अगेन in the same position, right? So these were our two stock recommendations, Nifty, Bank Nifty. Please like, share and subscribe. Free Telegram channel if you want to join, link is in the description. You can join that channel. We keep updating stuff that we see about the market. All the very best, guys. Trade well, trade smartly.